Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say the only impossible journey is the one you never begin. It was stated by Tony Robbins. तो चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए. Our first important headline is World Bank pairs India financial year 23 growth projection to 6.5%. ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे and it is related to paper to international institutions. In this article we have to know about the findings of latest South Asia economic focus. तो अगर हम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस की बात करें तो इट इज अ बायएनुअल इकोनॉमिक अपडेट प्रेजेंटिंग रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड नियर टर्म इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ एशिया. Recently, it has estimated that India will grow at 6.5% in the current fiscal year, right? Our next important headline is Ernaux wins literature Nobel. ये available है पेज नंबर 1 पे and it is related to miscellaneous section. In this article, we have to know about Nobel Prize in Literature and works of recent winner. तो 2022 Nobel Prize in Literature is awarded to French author Ernaux for courage and clinical equity, which she uncovers the roots and estrangements and collective restraints of personal memory, right? Our next important headline is UN Council rejects debate on Xinjiang. ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड इट्स रीसेंट डिसीजन इन कंटेक्स्ट ऑफ Xinjiang, right? तो फ्रेंड्स, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोटेड डाउन अ वेस्ट-लेड मोशन टू होल्ड डिबेट अबाउट एलिज्ड ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस बाय चाइना अगेंस्ट वीगुर्स एंड अदर मुस्लिम्स इन Xinjiang, राइट? अगर हम ओवरव्यू देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तो इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम मेड अप ऑफ 47 स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट? Our next important headline is Look Up. It is available on page number 5 और ये related है paper 3 science and technology से. In this article we have to know about Dark Sky Reserve. We have covered it on our website और link available करा दिया गया है description में. Our next important headline is Domestic ideologies in external settings. ये available है पेज नंबर 10 पे और ये related है paper 2 international relations से. In this article, we have to know about the key points of India's statement at the 77th United Nations General Assembly session and its repercussions and way ahead. तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे explain किया गया है. You can go through this, right? Our next important headline is Strengthening CSR framework is a profitable idea. It is available on page number 10 और ये related है paper 2 Polity and Governance से. In this article, we have to know about corporate social responsibility, specified activities, significance, issues एंड पाथवे टू फॉलो. तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम ओवरव्यू देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शंस विद देयर स्टेक होल्डर्स, राइट? न्यूज में क्यों है अभी? क्योंकि CSR स्पेंडिंग इन इंडिया हैज राइजन, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज India in a bind over its relations with Russia. ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से. In this article we have to know about India's stand on the Ukraine crisis, India's choices and actions in a changing geopolitical landscape, especially with regard to China. How can India safeguard its interest? तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया गया है. आप एक बार जरूर देख लीजिएगा. न्यूज में क्यों है ये भी? क्योंकि रिसेंटली India abstained from voting at the United Nations Security Council on a draft resolution against Russia for conducting referendums and annexing 4 regions of Ukraine, right? Our next important headline is it time for the gig economy? It is available on page number 12 और ये related है paper 3 economy section से. In this article we have to know about moonlighting. How is it affecting companies in India? Is it a punishable offense under the law? How has the work from home culture affected gig economy of our country? So friends, first we have to understand what is gig economy. So it is a labor market that relies heavily on temporary and part-time positions filled by independent contractors and freelancers rather than full-time permanent employees, right? अगर हम moonlighting की बात करें तो it is a state where employees work for remuneration with entities other than their employers. It is not defined in any of the statute in India. However, there are enactments that deal with double employment, right? बाकी अदर पॉइंट्स आप यहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक? Our next important headline is the Indian made light combat helicopter Prachand and its significance. ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. तो दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हमारी वेबसाइट पे भी रिसेंटली ही कवर किया गया था, राइट? और यूट्यूब चैनल पे भी ये अवेलेबल है. अगर हम ओवरव्यू देखें तो दिस प्रोजेक्ट कैन बी ट्रेस्ड टू द 1999 कारगिल वॉर
when armed forces felt the need for dedicated platform capable of operating at high altitudes and delivering precision strikes as existing attack choppers could not effectively hit targets, right? Our next important headline is Can Read Talk Vyommitra skills get lift off with digital grey matter. ये अवेलेबल है पेज नंबर 16 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट व्योममित्रा. तो व्योममित्रा क्या है? A humanoid which is designed and developed by ISRO to fly aboard unmanned test missions ahead of Gangayaan human space flight mission, right? Our next and last important headline is Government releases 7,183 crore deficit grant to 14 states. ये अवेलेबल है पेज नंबर 18 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट post devolution revenue deficit grant and its objectives. So friends, they are provided to states under Article 275 of the Constitution of India and they are released to the states as per recommendations of the successive finance commissions to meet the gap in revenue accounts of state post devolution, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates you can follow us on various social media platforms.